Hello everyone. So today we will see how you can animate a commercial ad. So first, let's see what we are going to animate today. So we are going to animate this commercial ad in After Effects. So सबसे पहले हमने ये डिजाइन फोटोशॉप में क्रिएट करा है. You can see अब ये फाइल हम आफ्टर इफेक्ट में इंपोर्ट करेंगे फॉर एनिमेशन. You can simply drag and drop your file, select composition, retain layers and click OK. So here you will get your all the layers. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे टेक्स्ट एनिमेशन से. टेक्स्ट एनिमेशन के लिए हम स्ट्रोक इफेक्ट का यूज करेंगे. सबसे पहले हम हमारे 5 प्रॉब्लम टेक्स्ट को सेंटर में रखेंगे. देन लेट्स क्रिएट मास्क ऑन दिस. नाउ अप्लाई स्ट्रोक इफेक्ट ऑन दिस लेयर. चेंज द कलर टू रेड. इंक्रीज द ब्रश साइज एंड हार्डनेस. मेक श्योर कि आपका जो लेटर है वो पूरा कवर हो जाए लाइक दिस. नाउ आप इसमें पेन स्टाइल में सिलेक्ट करोगे रिवील ओरिजिनल इमेज एंड स्टार्ट एंड एंड को हम एनिमेट करेंगे. और यू कैन सिंपली एनिमेट स्टार्ट टू रिवील योर टेक्स्ट एंड देन इजी ईज. सो यू कैन सी कि मेरा लेटर इस तरह रिवील हो रहा है. ठीक है, सेम आपको इसी लेयर पे सारे लेटर्स पे मास्क क्रिएट करना है. यू कैन क्रिएट मल्टीपल मास्क ऑन लेटर्स लाइक दिस. यहाँ पे ऑल मास्क को सिलेक्ट करना है. इस तरह आप सारे लेटर पे मास्क क्रिएट करोगे एंड देन स्टार्ट को एनिमेट करेंगे. सो यू विल गेट दिस टाइप ऑफ टेक्स्ट एनिमेशन. अगर आप चाहो तो आप लेयर्स को ब्रेक करके अलग अलग मास्क भी क्रिएट कर सकते हो. लाइक मैंने इसे 5 लेयर्स में डिवाइड करा है. Now let's come to our next text animation, which is one solution. Now for this, I will use Text Evo plugin for text animation. I will simply apply Text Evo, then go to transform and use opacity and position property. And for line, you can animate scale property. So this is how you will be animating your text. Then comes our product. So we will animate our product, isolate your product and so this is how we will animate our product. First it comes to the center, then it will move to the right side because we have these icons to animate. So we have a group. So you can see that we have a pre-composition for all these benefits, right? So that it will be easier for you to animate. Now let's see how you can animate these benefits. So first our text animation, then product, then it will move to the right and then all the benefits. For benefits, create pre-composition for each and every benefit. So this is our icon. First animate ellipse scale property like this. Go to elastic and elastic. Now we are going to animate our icon. We will animate position for this icon like this. Again we will use elastic for the keyframe and give a little bit of offset like this. Then just duplicate the ellipse, place it on the top and select alpha matte for the icon like this. Now you can see कि हमारा जो आइकन है वो थोड़ा सा इस लाइन के ऊपर भी आ रहा है. तो what we can do is, so उसके लिए आप इस एलिप्स को की वैल्यू को थोड़ा सा स्केल में कम कर सकते हो. So now it's perfect. Or you can do 96. So you can see our icon animation is ready. Now again, first it will appear in the center, then it will move to the left side here. And for graph, you can make graph like this. So we have animated our icon. Now we have this text and layer.
For this layer, create a mask on this. Now we will animate mask path property so that we can get a revealing effect. Go copy paste this key here. Then we will select the path and easy ease and adjust the graph like this. Increase the distance between keyframes a little bit so that the animation will be smooth. Also increase the feather, mask feather, so that you get a smooth edge. Now match the timing. Now again for text animation we will use Text Evo. From here just click add. You will get properties. Go to the transform, then position and opacity. तो हमें एक text animation मिल जाएगा. So right now the animation is little bit slow. So go here, change it to the letters. Now it's much better. Adjust the timing and your benefit is ready. Now for all the benefits, repeat the same process and give a little bit of offset like this. So first our text animation, then product, then our benefits, and in the end shop now. For shop now, you can simply animate scale property on both layers individually, then give a little bit of offset. To enhance your animation a little bit more, you can animate these elements as well, like all these flowers. You can see that they are rotating. Subscribe our channel Digital Motion Academy if you want more amazing tutorials like this. And अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो.